morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Yes, this is your maths class and we are doing our chapter number 4, addition. Right? In the previous class, we discussed word problems of let's try 5. Right? In today's class, we are going to discuss estimation of let's try 6. Okay? In today's class, we are going to discuss our next exercise. Let's try 6. Okay? So what is estimation? Estimations means approximate. ठीक है? और some terms we use in estimate like about, close to, nearby, right? So these terms we use in estimation. Okay? Or we say that approximate value. Okay? So estimation के अंदर हम क्या यूज करते हैं कि approximate value कि इसके close है ये value. ठीक है? So by using estimation we can get the round of value. ठीक है? Of any number. Okay? So let's start. हमने किया था in chapter number 1 and chapter number 2 we already done estimation or round of the number to the nearest 10, nearest 100, right? Nearest 10 and nearest 100 का हमने calculate किए थे numbers, right? So in this exercise we also have to do approximate or round off to the 100. Okay? इसके अंदर भी हमें round off to the nearest 100 ही करना है and then we add the numbers. सबसे पहले जो हमें given digits होंगे, जो given number है, first of all we have to approximate that number to the nearest round or to the nearest 100. Okay? Then we have to add those numbers. Okay? जो round off digits होंगे, जो round off numbers हैं हमारे, उनको फिर हमें add करना है. Okay? So in question number 1 of your let's try 6, we have given question number 1 is add the following. One has been done for you. आपको ये जो given sums हैं आपको उन्हें add करना है, but one sum has been done for you. एक question एक sum आपके लिए किया हुआ है. Okay? So estimate the sum. You have to estimate the sum by rounding each addend to the nearest 100. This is a addend. Okay? What is addend? This is the addend. This is also addend. जिन numbers को आप add कर रहे हैं that are called addend. Okay? So 189 is addend and 334 is addend. Okay? So these numbers are called addend. इनको हम addend कहते हैं. So you have to estimate the sum. आपको sum estimate करना है by rounding जो भी आपके addends given हैं. So you have to round off that number to the nearest 100. Okay? So you have to round off this addend to the nearest 100 and this addend to the nearest 100. Show your work. Okay? Then you have to show your work or then you have to calculate it. Okay? Now our first sum is that has been done for you. A part, question number 1, A part, 189 and 334. So all of you know that how we can round off the given number to the nearest 100. हम कैसे round off करते हैं given number को to the nearest 100 के ऊपर, right? So first of all, let's round off the given addends. पहले हम round off करेंगे given addends को to the nearest 100. Okay? So let's start. First addend is 189. Okay? So 189, it comes between which two hundreds? किन two hundreds के बीच में आता है 189? Yes, 100 and 200 के बीच में, right? 100 and 200 के बीच में आता है. या फिर मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी. I told you a trick that ones, tens and 100, right? And मैंने आपको बताया था कि if we round off the number to the nearest 100 place, so जो 100 place है जिस पे आपको round off करना है, you have to use that digit in the left side. 1 है हमारे 100, so आपको वही digit आपको left side में use करनी है. Okay? And its next number to the right hand side. ठीक है? You have to write its next number or successor of that number to the right hand side. Okay? So हमने 100 पे राउंड ऑफ करना है. जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है आपको वही नंबर यहाँ पे राइट डाउन करना है एंड उससे आगे जो है आपको जो भी गिवन है, ठीक है,
जितने भी नंबर्स गिवन है आपको उतने ही आप कितने डिजिट्स गिवन है आपको 2 डिजिट्स. सो यू हैव टू मार्क हेयर और यू हैव टू राइट हेयर 2 zeros. ओके, आपको यहाँ पे 2 zeros पुट करने हैं. नेक्स्ट, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया. एंड राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नंबर था उसी का ही सक्सेसर, और वी कॉल इट नेक्स्ट नंबर. सो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, सक्सेसर ऑफ 1 इज 2. ओके, एंड वी हैव टू पुट हेयर 2 zeros. 2 0 आप लगा देंगे यहाँ पे. ओके, सो 189 लाइज बिटवीन 100 एंड 200. ओके, सो नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर द नंबर्स. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर द नंबर्स. नेक्स्ट स्टेप हमारा यही था, कंपेयरिंग द नंबर्स. कौन से नंबर को कंपेयर करेंगे आप, जिस भी प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है उससे 1 स्मॉलेस्ट प्लेस के डिजिट को आप कंपेयर करेंगे. ओके, सो 1 नंबर और 1 प्लेस जो छोटा डिजिट है आप उसको कंपेयर करेंगे. नाउ यू हैव टू राउंड ऑफ द डिजिट, you have to round off the number to the nearest 100, but we have to compare its tens place digit. Okay, so we have to compare tens place digit, that is 8, but we have to compare it with 5. आपको 5 से कंपेयर करना है, राइट. नाउ 5 से कंपेयर करने के बाद में, as you know that if this digit is less than 5, then the number round off to the स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, जो नंबर है वो राउंड ऑफ कहाँ होगा, स्मॉलेस्ट नंबर पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे. ओके, एंड इफ दिस डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर ये बड़ा हुआ 5 से या इक्वल हुआ 5 के, देन दिस नंबर राउंड ऑफ टू द बिगेस्ट नंबर. ओके, तो ये नंबर किस पे चला जाएगा, बिगेस्ट नंबर पे. दिस इज योर स्मॉलेस्ट एंड दिस इज योर बिगेस्ट नंबर, राइट. सो हियर वी हैव गिवन 8, एंड इफ वी कंपेयर दिस 8 विथ 5, then as you know that 8 is greater than 5, 8 जो है वो greater than 5 है, then this number will go to the 200. okay, so 189 कहाँ पे राउंड ऑफ होगा, 200 के ऊपर, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर और एडेंड 334. ओके, 334 भी आप इसी तरह से करेंगे कि आप क्या करेंगे, 300 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड 400 राइट हैंड साइड में. ओके, क्योंकि 100 प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है. सो 3 आपने यहीं पे सेम डिजिट राइट डाउन किए हैं, एंड इससे नेक्स्ट टर्म आप राइट हैंड साइड पे राइट डाउन करेंगे, दैट इज 4. ओके, एंड वी हैव 2 डिजिट्स आफ्टर दैट, सो वी हैव टू पुट 2 zeros here, same 2 zeros we have to put here. Okay, so it lies between 300 and 400. Okay, now compare its tens digit. Now we have to compare its tens digit. Tens digit को आप tens place digit को आप compare करेंगे with 5. 5 से compare करेंगे. Now we can see that 3 is less than 5. 3 जो है वो 5 से छोटा है. So this comes to the smallest number. तो ये कहाँ पे आ जाएगा, smallest number पे. This is smallest and this is biggest number. Okay, so 334 round off to the 300, right. So now you have to add these two numbers. Okay, आपने पहले क्या करना है, first of all you have to round off these numbers to the nearest 100. आपने these addends को round off करना है to the nearest 100, and then you have to add these numbers. So add these numbers, 0 0 0 0 0 0 and 2 plus 3 is equals to 5. Okay, so 500 is the required answer. Okay, now let's do its B part. Okay, so B part of question number 1 is 441 and 323. Okay, so we have given these two numbers, means these two addends. Okay, we call it addends. Addends हम बोलते हैं इनको. Okay, so first of all you have to round these addends to the nearest 100. Okay, so let's start. First number or first addend is 441. Okay, so it lies between 400 and 500. Okay, 400 and 500. Then 323, it lies between 300 and 400, right? Because we have to round off its 100 place. So 100 place, जिस भी place पे आपको round off करना है, so you have to write that number here. Okay, and
After that, how many digits are here? We have given 2 digits, so we put 2 zeros here. Similarly, on the right side, we can write its successor number. 5 is a successor of 4. Okay, and then you have to put 2 zeros here. Similarly, we do the same with 323. Okay, now we have to compare. अब हम क्या करेंगे? Compare करेंगे. We have to round this number to the 100. So we compare its tens place digit. 1's tens. So 4 is a tens place digit. Okay. And we have to compare this with 5. हमें 5 से ही compare करना होता है, right? But आपको place ध्यान रखनी है कि कौन सी place की digit को आपको compare करना है. जिस भी place पे आपको round off करना होता है, उससे जो एक छोटी वाली place होती है, उससे एक जो पहले वाली place होती है, आपको उस place पे राउंड ऑफ करना होता है. सॉरी, उस प्लेस को कंपेयर करना होता है विद 5. ओके, 100 प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप टेंस प्लेस डिजिट को कंपेयर करेंगे. अगर टेंस प्लेस डिजिट को टेंस प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी उसको कंपेयर करेंगे. ओके, एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद 5 ओनली. आपको 5 से ही कंपेयर करना है. ओके, नाउ यू कैन सी दैट 4 इज लेसर देन 5. 4 जो है वो छोटा है 5 से. सो दिस नंबर मूव टू द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, 400 इज स्मॉलर देन 500. सो दिस नंबर विल कम्स डाउन टू और राउंड ऑफ टू द 400. नेक्स्ट इज टेंस प्लेस कौन सा है इसमें? 2. सो वी हैव टू कंपेयर दिस 2 विद 5. ओके, अगेन here 2 is less than 5. So this number will round off to the 300. Okay. So we write here 200. Now we have to add these two numbers. अब जो आपने राउंड ऑफ किया है, इन 2 नंबर्स को आपने ऐड करना है. So 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, right? And 4 plus 3, 4 plus 3 is equals to 7. So 700 is the required answer. Okay.